लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि पापा का पार्ट आने का वो खत्म हो गया था 2017 में, जैसे हम सब जानते हैं। और फिर हमने देखा दादियों का era of daddies is over. दादी रतन मोहिनी तो है, she is still there, लेकिन दादीज सब परिवार को पालना करना, ट्रैवलिंग करना, सबको मिलना, सबको उमंग उत्साह में लाना, तो दैट टाइम फिनिश्ड। और ना सिर्फ दादीज, लेकिन जैसे आपको बताएं अभी हमारी दीदियाँ भी हैं, जैसे यहाँ की दीदी निर्मला का पार्ट बदल गया, तो मतलब इट्स अ साइन, वी हैव टू रिस्पॉन्ड के समय का पुकार क्या है। तो वन थिंग इज देयर के जो पहले सपोर्ट्स थे, द सेम सपोर्ट्स आर नॉट हियर नाउ। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो बाप दादा हमारे घर आते थे, अभी बाबा कहते हैं अभी मेरे पास आ जाओ। इससे दुनिया में, कॉर्पोरेट लाइफ में, बिजनेस वर्ल्ड में सब लोग प्रिफर करते हैं वर्किंग फ्रॉम होम। आफ्टर कोविड वर्किंग फ्रॉम होम, बाबा आल्सो लाइक्स वर्किंग फ्रॉम होम। ऊपर बैठ के प्रकाश देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। तो हमको जैसे इंडिपेंडेंट एफर्ट मेकर बनना है। और मुझे याद है कि जब दादियाँ थी, आपका भी अनुभव होगा, लेकिन जब हम किसी दादी के आगे जाते थे तो इट वाज जैसे गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। हमको लगता था कि मेरे में क्या है, व्हाट इज इनसाइड मी। दादी कैन पॉइंट आउट इफ अगर दादी का कुछ लगे कि चेहरा ठीक नहीं है या वाइब्रेशन ठीक नहीं है, तो पूछेगी समथिंग, लेकिन दैट क्वालिटी ऑफ चेकिंग इज नॉट देयर। एक बार मुझे याद है जब दादी गुलजार यूके में आए थे, ऑक्सफोर्ड में ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में, तो दादी जान के दादी गुलजार बैठे थे स्टेज पे, और पूरे यूरोप के सब टीचर्स थे, अबाउट एटलीस्ट 100 लोग होंगे, और अलग अलग यूके के सेंटर से भी लोग आए थे। तो फिर दादी जान की दादी गुलजार को कहती है कि दादी जी इन सब के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो इनके सब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, ये सब शांत हो जाते हैं। तो दादी गुजरा दादी जानकी को कहा था कि जब ये आपको देखते हैं ये सब अलर्ट हो जाते हैं। एंड इट्स ट्रू, बिकॉज दादी जानकी का तो to dot every I, to cross every T, 3 times, 5 times, 10 times. तो नेचुरली जो दादी के साथ होते थे वो दैट सेम अटेंशन होती थी। But you can't rely on drama, you can't rely on any other soul. Ultimately, you have to make your own efforts. Ultimately, it's between you, the soul, and the Supreme Soul. तो प्रश्न ये है कि मैंने धारणा कहाँ तक पहुँची है। ये नहीं पूछना कि कितने साल से ज्ञान में है, लेकिन कितने साल से ज्ञान मेरे अंदर में है। How much have I imbibed? तो बाप दादा तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करना is not enough anymore, लेकिन हमको बनना है तीव्र पुरुषार्थी। और ना सिर्फ तीव्र पुरुषार्थी, लेकिन कहते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी। So then it's a question for each one individually कि मेरे लिए पुरुषार्थ का डेफिनेशन क्या है, तीव्र पुरुषार्थ का डेफिनेशन क्या है, और डबल तीव्र पुरुषार्थी, what's that look like for me? How can I upgrade my level of efforts? And it's very individual. Each student has to check themselves inside.
अपने लिए how am I inside, where am I at. तो इस सेशन को हमने कहा था as a workshop. These days I prefer workshop to just straight class, because workshop में you make your own discoveries. Thank you, Ajay. Thank you. तो कब तक है? Until 7 o'clock we have. Up to 7:30, but it is up to. Yeah, okay. So let's start with some process reflective questions. तो ऐसे करें, हम groups बनाएं. Are you okay with that? Yeah. To make some groups and some moving around. ऐसे करें, तीन के groups बनाएं, in threes, just with people around you. तो जैसे अपनी कुर्सियाँ को थोड़े से move करके make groups of threes if you can. आपका तो है. और पीछे सब use कर सकते हैं, तो you don't disturb each other when you are speaking, so you can move towards the end. थोड़ा spread out हो जाओ, spread out. पीछे का group you can go further back. Yeah, I'm saying यहाँ के groups हैं ना, you're too bunched up. एक group थोड़ा सा पीछे से हो जाए. Please go back. Otherwise, when you speak, you will disturb each other. Okay, so what we're going to do is I will ask you a question, then I will ask you to reflect on the question, and then share your answer in your small group. तो लिखने की जरूरत नहीं है. You have mukti from your notebooks. Side mirror. Okay, so here comes question number 1. So just close your eyes, even as you are listening to the question. Question 1 है, in English में बोलता हूँ कि you may have been on this spiritual journey for a short time, maybe a long time. Question is, where have you reached so far in your spiritual journey? Where have you reached so far in your spiritual journey? Yani, where are you at in your spiritual journey? कहाँ तक पहुँचे हो अपनी रूहानी यात्रा में? Just think about it for a moment. Okay, then you open your eyes and share in your small group. Okay, take about 5 minutes. 5 minutes, share with each other.
जैसे एक सब्जेक्ट में 80 और एक में 60 ओवरऑल सबका 11% बेस्ट टाइम तभी टीचर को आपको कौन सा लेवल है बात करते हैं सब बच्चे अच्छे रहते हैं उस लेवल से देखें मैं अपना मैं भी तो प्रिपेयर करता हूँ उस लेवल पर बाबा कहते हैं निरंतर याद रखें सब पुराने संस्कार स्वभाव खत्म और काम करने की उसमें भी बात है ज्ञान तो हमेशा में देता है ज्ञान के लिए उसका स्वरूप कैसे बने ओवरऑल देखेंगे तो 56 मतलब मैं अपना अंदाज से उसका कोई खुद को ही मालूम है बच्चे किस लेवल से चेक करते हैं वो भी करना आराम से समझ बढ़ती जा रही है मुझे वो आपको मालूम है जो भी आपने एक्सेस किया ठीक है पुराना 1 minute more. 1 minute more. आपने तो सुना है ना सिस्टम टू सिस्टम बाबा जो बाबा जो चाहते हैं ना मुझसे काम है पहले से तो सब में चेंज आएगा वो कुछ भी मालूम होता है बाबा जाने या नहीं ये बहुत अच्छा है Okay, thank you. That was question 1. Okay, हम आएंगे to question number 2. लेकिन उससे पहले हर एक ग्रुप से एक जना प्लीज स्टैंड अप. एक जना from each group. डरना नहीं, nothing bad will happen. हिम्मत रखो. Right, सबसे ग्रुप से okay. जो लोग खड़े हुए हैं
you have to join another group. आपको जाना है दूसरे Okay, the question number 2. Again, आप आंखें बंद कर सकते हैं to reflect कि इस लाइफ में हम बहुत सीखते हैं. It's a life of continuous learning, and we learn in many different ways. From Murli, from classes, from conversations, through personal realizations. The question is this: okay, in the last year, 2024, what was the main lesson for you for your spiritual progress? I repeat, in the last year, what was the main lesson you learned for spiritual progress in the last year? So just think about that for a moment. Okay, open your eyes, share in your group again. You have 5 minutes and 12 seconds for this. मेरा तो हमने particularly वो लास्ट वीक किया तो ये समझ में आता है मैं रिलेशन अपने साथ क्या कंफ्यूजन चल रहा है मुझे क्या बड़ा बड़ा कुछ लगता है स्पिरिचुअल या थोड़ा बहुत विकल्प नेगेटिव चल रहा है इस तरह का हमारे ऑफिस सही योग का वर्ड नहीं है ये मैं फोकस मेरा जो रहा वो मेरे संकल्प के साथ मन
नहीं, पता नहीं सही बात क्या उनको थोड़ा बैलेंस नहीं है, हैबिट ठीक नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप इतना दूर से चला के आते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपका है, तो आपके अंदर में आपको ज़्यादा मालूम है, आपकी बॉडी क्या कह रही है आपको ज़्यादा मालूम है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ नहीं। मुझे भी लगता है कि थोड़ा प्रिपरेशन रहता है। लर्निंग का एक वापस कर लेते हैं, कभी भूलना कभी भूल जाएंगे। आत्मा आपका तो आपने बोला इच्छा बात होती है कृष्ण की इच्छा से आपने यहाँ शरीर उठाया, साक्षी मैंने संकल्प One minute more. 1 minute more. 1 minute and 1 second. मुझे यही कहना चाहता हूँ कि ये सब ध्यान करो, बिजी रखो अपने आप को। Okay, so question 3. Taking question 3 से पहले, can one person from each group stand up who did not stand up before? Different person. Say goodbye to your friends, join another group. Yes, one person needed here. Yeah. Okay, so question 3 clear, you have to look here, look at me. So, okay, for example, you are moving in your spiritual journey like this, and you have reached up to here.
Let's say the next stage of your dharana is you are here. The question is, how will you be when you have reached the next stage of your progress? How will your dharana be? How will you behave? What will you be like? So, question part A, describe yourself when your dharana is upgraded. Secondly, what attention you have to pay, what more attention you have to pay to reach there. Clear हुआ? Two part question. जब आपकी थोड़ी सी और उन्नति हुई, आपने हाई जंप लिया, तो आप कैसे होंगे? आपकी धारणा कैसी होगी? और आप किस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए? Clear? Okay, तो reflect एक मिनट के लिए. Silence to reflect upon yourself. Okay, and then you can open eyes, sharing in your group. Okay, sharing with each other. 5 minutes, 16 seconds.
उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो कैसे करेंगे उसके हिसाब से लेकिन आप इससे जैसे भी आपका मालूम नेचर है या कोई भी संस्कार है आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अब वो क्या है वो तो आप लोगों के हाथ में है। तो उसके लिए क्या होगा? अब मान लो जैसे मान लो एग्जाम्पल सबसे बड़ा आलस का है तो उसको कम कर दे उसको मतलब रेगुलर बेस में रेगुलर बना के अपने आप को पावरफुल मेडिटेशन करना देखिए जैसे जब आप मेडिटेशन स्टेज पे जाओगे तो आप कैसे जाओगे या कैसे अपने आप को देखोगे दूसरा उसके लिए मतलब जैसे मान लो आप मुझे देखते हैं मैं ध्यान में भी बार बार थोड़ा सा उसके लिए मैं डबल डबल ध्यान करता हूँ उसके लिए मैं या मैं एक आध विजुअलाइज करता हूँ उसके लिए 4-5 मिनट मैं डिस्कस करता हूँ या योग कर सकते हैं सब योग तो 4 है योग में भी मेरा नियम है एक रिलैक्स बॉडी करने के लिए 3 से 4 मिनट का योग करता हूँ उसके लिए मैं कोई बीच बीच में लगा जाता हूँ 5 मिनट कुछ कोई विधि अपनी जगह ठीक है ये अच्छी बहुत दोनों अच्छी बातें हैं जैसे मान लो अभी आप किसी मेरे चेहरे को कई बार देखते हैं तो कैसा स्थिर होना वो साधन हो गया मतलब सही स्थिति जो आपकी मान लो 40% बता रहा हूँ ठीक है उसके लिए बार बार अपने करना बार बार 1 minute more. 1 minute more. Okay, thank you. Coming to last question now. Last question. Again, one person from each group stand up who did not stand up before and join another group. Join another group. One person needed here. एक जना याद है आप तो याद है कोई और होना चाहिए just check with someone चार हो गए एक ग्रुप में शुरू से 4 अच्छा हमारे ग्रुप में भी 4 है we need one person okay fine all right the final question again you can just close your eyes
The two-part question. तो आपको बाबा में क्या चीज मोस्ट पसंद आती है और पार्ट बी बाबा को आप में क्या पसंद आता है What do you like most about Baba and what does Baba like about you? So think about that for a moment. Okay, then open your eyes, share in your group, and you have 3 hours for this. That was the easiest one. Yeah. 3 hours. बाबा का क्या अच्छा लगता है बाबा की कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है आपको कौन सी बात बाबा को अच्छी लगती है चलो बाबा रिव्यूज में बोलो आपकी कौन सी क्वालिटी है जो आप समझते हो उसकी वजह से बाबा ने आपको समझ लिया आपको बाबा का क्या अच्छा लगता है बाबा का क्या अच्छा लगता है आपको बाबा को ध्यान रखना शिव बाबा की शिव बाबा की कौन सी चीज आपको अच्छा लगता है जिसके लिए आप यहाँ रुके हो रुक गए आपकी कौन सी चीज अच्छी लगी सच्चाई अब आप
तो जो है जैसा है भगवान ने मुझे लिखा वो बाबा ने लेकिन सच्चाई जो है आज्ञाकारी का Okay, final minute. Final minute. Time is up. Okay, so thank you. Okay, you can come back to your original position. बैठो 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 मैं बैठो Sit down, or the white cloth. Okay, तो कैसे लगा? हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत हैं शेयर करने के और दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनने के very rich life we have. Now we move to next part. कि हम देखें अगर हमको किसी चीज में भी अच्छा रिजल्ट चाहिए है, we want a good result in something. What is the formula for that? तो रिजल्ट को हम कह सकते हैं आउटपुट. हमको किसी चीज से आउटपुट जो मिले, that is connected to input. The result is input या effort. तो कह सकते हैं if you make more effort, you get more result. लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है कि you are making lot of effort, लेकिन result is not coming. Something is wrong. मानो कि मैं आपको एक बाल्टी दूँ, I give you a bucket, और मैं आपको कहता हूँ कि please fill it with water, full. वहाँ नलका है, आपको उसको पूरा भरना है. So you push the bucket underneath the tap, open the tap. You think ये तो easy है, भर जाएगा. और बीच में आप कुछ और करते हैं. You come back after 2 minutes, so देखा it's not full. तो लगेगा what's the problem? फिर नलके को ठीक से full open करेंगे. Then you think ये तो हो जाएगा. लेकिन फिर भी full नहीं हुआ. Something is wrong. बस कुछ होल होगा इसमें. There is some leakage point. जितना भी आप पानी भरोगे, it will never be full because leakage is there. So if you want results, you have to look at two things. Effort you are making, but divided by wastage. Yeah, two things we have to see. तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है, if you want to make your result jump, So you have to pay attention to two things. Simple mathematics, how to increase the result. use the West or increase the effort. You can do both. है ना? Yeah. Usually हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं, मुझे और पुरुषार्थ करना है.
extra Amrit Vela. I have to do more this, more that. Oh, तो है, very good. That mostly we pay attention. लेकिन मुझे लगता है we pay less attention to reduce the waste. तो इन दोनों को चीज़ों को देखना है. What should I do more? What should I do less? Do the right thing more, do the wrong thing less. So, what is wrong thing, what is right thing? That's very individual. जैसे बाबा ने कहा था ना एक बार, चेक अपने लीकेज पॉइंट्स को चेक करो, अपने ड्रेनेज पॉइंट्स को चेक करो, कि अपने अपनी इंडिविजुअल लाइफ में where my soul energy is being wasted. किस situations में I am overthinking. किस situations में हमारे पुराने संस्कार gets triggered. It's very individual. Because हर एक को अपने पता है कि अपने अपनी कमियाँ क्या है. तो एक तरह जैसे general treatment, Baba is general practitioner. लेकिन हमको बनना है specialist. अगर for example अगर मेरा anger का problem है, गुस्सा होता है, किस situation में गुस्सा आता है? तो कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसे बात करता है या someone looks at me like that, if someone's facial expression is like that, या किसी की tone of voice is like that, मुझे irritation होता है. I have to ask myself, ये क्यों होता है? What should I do so I don't lose energy? Every individual on this checking. Children, is that okay? So that's one thing to check. But for this, we have to ask ourselves, okay, what I should pay attention to more, what I should reduce in my own self. तो आपने एक बार कहा था कि अगर हमारी स्थिति ऊंची है, then we are easily able to cross the obstacles which come for us. Let's look at a model of Smriti, my awareness model. What can we do so that my quality of my Purusharat goes to another level? Okay, this is a model of your awareness. It's opening out like a V shape. And here is your awareness. Here your awareness is very limited. For limited awareness, matlab, we don't understand life. Limited awareness, हम थोड़े confusion में होते हैं. ये था हमारी पहली की स्थिति. Who am I? Who are you? What is life? What is death? What is justice? Why good things happen to bad people? Why bad things happen to good people? No clue, no understanding. तो जब हमारी स्मृति या awareness limited होती है, then we feel very insecure. अंदर की insecurity आती है. And when you feel insecure, what do? Automatic response क्या होता है when you feel insecure? For example, अगर आप कहीं चल रहे हो, हाँ जी? We start remembering God here. Okay, so you look for something to feel secure. Huh? So even physically, अगर आप चल रहे हो कहीं और floor is slippery, बारिश थी and the ground is wet, if you are slipping and falling, without thinking, you will grab something to feel stable. सोचेंगे भी नहीं. Complete stranger is going by, you will grab. Afterwards, you'll say, sorry.
At that moment you don't think because you want to feel secure and stable. Same thing, the mind has been doing the same thing for 63 lives. द्वापर युग कलयुग में जब अंदर की insecurity आई थी, we hold on to something, to a person, to a place, to an idea. Something, the mind has been grabbing something. So we start to the practice of holding on to something. And after you've been holding on to something, you form dependency. You get used to it. And eventually, the dependency, it becomes an attachment. And we know somewhere at the roots of all suffering, you will find attachment. तो इसको कहते हैं जीवन बंधन. कलयुग में जीवन बंधन, everyone is like that. लेकिन बाबा हमको एक invitation देते हैं. Baba says, come here. यहाँ जा. Come into unlimited awareness. बेहद में आ जाओ. तो जब यहाँ होते हैं, then you feel very secure. And when you feel very secure, तो automatically मन क्या करता है? अजी? Yes, आनंद है. First step, you let go. Yeah. When you feel secure, you let go. No need to hold on, let go. Let go and become free. छोड़ो तो छूटो. लेकिन कैसे छोड़ेगा? जब सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी. अगर कोई सिक्योर नहीं है तो वो नहीं छोड़ेगा. You will hold it. But when mind feels secure, then now I let go. Let go and be free. So freedom आती है, that leads to a real happiness. तो बाबा हमेशा यहाँ है. Baba is always in unlimited, always in eternal. बाबा अभी हमको निमंत्रण देते हैं, please come, be with me. लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? How to go from limited awareness to unlimited awareness? For that, we need some rocket fuel. And what is that rocket fuel which can take your buddhi into better? उसको हम कहते हैं ज्ञान. Gyan is the rocket fuel which can take you into the unlimited. हमको पूछना है कि how much I am actually using ज्ञान in my life. कहाँ तक मैंने ज्ञान को really deep में explore किया. So let's explore this. कि आजकल तो बहुत ज्ञान है. इससे पहले जब यज्ञ शुरू हुआ था तो obviously ज्ञान कम था. शिव बाबा का भी ज्ञान क्लियर नहीं था, took some time. लेकिन आत्मा का ज्ञान था. And because of that, they could focus on that. Deep में गए. लेकिन आजकल इतना ज्ञान सागर है, इतना ज्ञान है, so many classes, YouTube classes, Zoom classes, this class, that. Very good. लेकिन ना सिर्फ आपको ज्ञान points collect करने हैं, we have to use the ज्ञान. There's no use remembering 5 only points. Point is to use the point. You know? नहीं तो ये ज्ञान I remember 5 only points. लेकिन practical में आया नहीं आया. हमको academic राजयोग academic नहीं बनना. Professor of राजयोग नहीं बनना.
Pandit nahi bana. You have to bring it into the practical life. Let's explore a bit more. What is this thing called Gyan? How to understand what Baba is trying to teach us. So Baba loves teaching by using metaphors. Metaphors, understand? Yeah. So let's say, for example, here we have Gyan. What metaphors has Baba used to describe Gyan? Let me start with one, just to get the ball rolling. So for example, Baba says, Gyan Roshni. Gyan is light. Light का मतलब क्या है? What does it mean, light? Why Gyan is light? वो अंधकार को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है। रोशनी हो सकती है, Yes. रोशनी भी और लाइट भी, हल्का भी। Right वो भी है। लेकिन जहाँ darkness होती है, जागृति, जहाँ darkness होती है, you are confused. You crash into something. You misunderstand something for something else. This is your famous example. I think शास्त्रों में है कि a man was walking, उसके आगे एक रस्सी थी. He couldn't see it. He thought it's a snake, so he stopped, and he was experiencing fear. लेकिन जब light आए, तो देखो it's nothing. हमारी life में we have been misunderstanding things for half a cycle. What is God's responsibility? What's my responsibility? What is life? What is death? What is right? What is wrong? Confusion. लेकिन जब light है, I can see the reality. Where there is light, I can make an informed and educated choice. Think about it. Why Gyan is light? It helps me to see reality. Another one? Can you think another one? Ali? Sword. Okay. But what do you know about sword? Why Gyan is like a sword? It's sharp. जब It can माया cut away. Ali? It's sharp. It can cut away unnecessary voices. Yeah. Sword is a weapon. माया का Protection from my. Yeah, it's a weapon. आप किचन में सब्जी नहीं काटोगे sword के साथ. For that you use चाकू. But sword is a weapon. Yes, protection. Yeah. तो मतलब है जहाँ हमारे व्यर्थ संकल्प होते हैं, sword of knowledge can cut the stream of waste thoughts. एक second में cut by using ज्ञान. लेकिन the sword has to be sharp. हाँ जी. योग धार हो सकता है उसका। Yeah. Connection is धार। Okay. So we have to work on keeping the sword sharp, and we have to use the sword. If you don't use it, it becomes rusty. So we have to use regularly for the self and also share with others. It keeps you active, keeps you alive, and keeps it in best condition. Okay, another one. Gyan is what else? Might. Knowledge is might. Okay. So might means, Shakti-shali. what does it mean? Power. It empower the soul to cross any obstacle Okay. when we use the Gyan point. Okay. So when you use Gyan point, you can cross the obstacle. Because you need might, you need power to shift something. So also might can shift your attitude. It can shift your vision. It can get you out of a negative thinking mode. Gyan is might. Okay, another one? It is a treasure, it's a wealth. Jewels of knowledge. Gyan Ratan, jewel. So how is it a jewel? How? Precious. It becomes our treasure that we can use if viewed at the right time. Then it helps us to navigate situations in life. Okay, yeah, jewel is very valuable thing, huh?
very precious thing. So if we are using Gyan in our life, your thoughts become very precious. Your words become precious. Your actions become precious. Your presence becomes precious. Your life becomes precious. Other people will feel you are like a gift. Your family, your friends, your work colleagues. But you have to start by valuing your own thoughts. So if I have Gyan in my intellect, they say, Baba, aaj keh rahe the na, speak Gyan with each other, discuss Gyan. If there is no Gyan, then you go into Gyat or into gossip. So when we sprinkle Gyan into your conversations, not only with Brahmins, but also with outside people. Okay, you may not give direct Gyan, you may not give knowledge, but you can speak knowledge fully. Sprinkle some Gyan into the conversations. So people say, okay, I didn't think about this. It is a new perspective for me. So our life becomes as valuable as a jewel. Anything else? One or two more? Mirror, truth mirror. Okay, let's come to mirror first. Mirror. So what do you know about mirrors? Do you like mirror? How many times do you look in the mirror every day? Sisters, brothers? Many times. And why Gyan is like a mirror? Shows me my weakness. Shows me why only the weakness. Yes, Shows me my state. yeah, that's right. So Gyan, the mirror shows you your reality. They say the mirror never lies. So for example, in the Lokik life, it's very common to point the finger outwards. If you said something and I got upset, I say, you made me upset. Lokik life. Alokik life, we turn this round and we say, why I allowed myself to become upset. You said something wrong, something bad, that's your business. Your business, not my business. My business, why I lost my swaman, why I lost my happiness, why I allowed myself to lose my stage. So we're checking inside. Habit is to do this. When this happens, we say, no, come back here. Okay, now it's good. But then again, this happens. Come back. Again, this happens. Habit is that. Mind's habit is that. Because sanskar. But we have to train it, no? Look in the mirror and ask yourself, how can I maintain my swaman? And then practice to stay in that swaman. Look at one or two more. Sometimes Baba says, Gyan is like rain of knowledge. Do you like rain? Yeah. You like rain? I love it. Really? Why do you like rain? It's refreshing. Yeah. Its sound is soothing. Okay. It purifies. Have you been to London? Yeah. Then you would not like rain. I haven't lived there. Yeah. But rain, of course, in terms of context of Bharat, when the rains come, monsoon comes, Everything is harvest is there as well. It's clean. Cleans up everything. Cleans up everything. जी आपने कुछ कहा? सब हरा भरा कर देते खिल जाते हैं सब Yeah. बारिश से Right. बाबा का ज्ञान भी हमें Right. And it brings new life, huh? The harvest. If the rains don't come, then the harvest is not there. So rain is like it brings life to a buddhi which has become very dry. Half the cycle we have been listening to ordinary things, human ideas, our own manmat, varmat. So buddhi became dry like barren land. Gyan is like rain, it falls on the buddhi and it begins to work again. New life, new ideas, new perspectives.
And you feel like, oh yes, now I see, I understand how it works. So like this, there are many, many points you can think of. Unique also. Haji? Baba's ज्ञान is unique. Baba's, Unique है. शास्त्रों में भी नहीं कहीं पे भी नहीं. right, Baba's gun is unique. So yeah, metaphor is like a loaded term, and we have to unpack it and discover the meaning inside. That's our job. Baba throws the metaphors at us. And our job is to churn it and think about it, unpack the meaning, discover the secret inside that metaphor. I'll add one more, which I like to think. Gyan is like a piece of coal. Understand coal, no? Like a coal mine. Koila. Why something else? Koila. So what do we know about coal? See, a piece of coal is like potential energy. लेकिन अगर उसको एक कोने में रखो, a sack of coal, not useful. But you have to burn it. जब उसको burn करते हैं, तो इसमें जो energy है वो निकलती है. And with that energy, you can move the train, you can do something, you can heat the room. So Baba कहते हैं, don't just keep the points of yarn in your buddhi, you can burn it, release the energy inside. Go into the depth of that point. So then how to go into the depth of a point of knowledge? How to take power from a point of knowledge? So let's explore 10 steps. 10 steps to go into depth of knowledge. After Behat Neona, block is nothing. Behat, no time, no space, no nothing. So let's say ये है एक ज्ञान का point. जब if you go excavating, digging into the ground, so you find these different layers. इसको कहते हैं sedimentary layers. तो भी अगर हम ज्ञान के point के deep में जाएं, so we find something different at each level. तो कोई भी point हम ले सकते हैं. Let's take the basic point, which is the most important point. And that is, I am peaceful soul. Om Shanti. कितनी बार हम कहते हैं Om Shanti? आजकल तो we say it as a greeting. Hello, Om Shanti. Goodbye, Om Shanti. I have to go, Om Shanti. जल्दी करो ना, Om Shanti. उसने शरीर छोड़ दिया, Om Shanti. Everything is Om Shanti. But Om Shanti is not a greeting. It's a very sacred word. We have to be in Om Shanti as we use Om Shanti. तो कह सकते हैं कि yeah, Om Shanti, I have heard this so many times. The first level is you hear it. You hear something. You can say, I hear so many times. 1,000 times I've heard Om Shanti. Okay, you hear it. Then you can say, well, yeah, I hear it and I know it. I know this. Lekin to know something is just like a piece of information. I know this is a chair. I know this is a fan. I know this is a marker. Nothing changes. I know I am a soul. So what? Nothing changes. Just a piece of information. So then if I go deeper, okay, I know I am a soul. The question is, do I accept it? The accept means this applies to me personally. Not just a general theory there, but this applies to me. I accept I am a soul. This is becoming personal. And so it's taking me to another level of
point of knowledge. Okay, I accept I am a soul. The next step is, do I believe it? बाबा कहते हैं जानना, मानना, go deeper. So to believe means it's going to act upon the belief system I already have. It's a big step. आप इस चीज को believe करते हो. For example, take two approaches. आप ये believe करते हो कि you were born somewhere in a certain city. आपके parents हैं, आपने किसी स्कूल में आप गए थे, किसी said university में गए थे. Maybe you got a job, maybe you got married, maybe you have a family, and now you are practicing to be soul conscious. Do you believe that? Or do you believe you are a soul who came from another world into this world 5,000 years ago? You went through 84 lives. You forgot who you are. Now you are remembering again. I am a soul. Are you a person trying to be soul conscious? Or are you a soul now remembering I am a soul? Are you a body trying to be a soul? Are you an Indian person trying to be soul conscious? Or are you a soul remembering I am a soul? You see the difference? Who is making what effort? What do you really believe? The belief, it's a deep step. Because हमारी attachment है to our culture, nationality, gender, race, then also things like profession, family, caste, property, etc., etc. These are very, very deep things. In सबसे पार होना takes a lot of practice. अच्छा आप इसको believe करते हो, you believe it, but do you understand it? You understand you are a soul. Understand मतलब you have to churn it. अभी बुद्धि चलानी है. Your body तो एक amazing चीज है. It's an amazing machine. Body में जो systems हैं, they're working together same time. Respiration, blood circulation, digestion, central nervous system. It's an amazing machine. They're working together. You're not even aware. लेकिन only they're working if you are driver's seat. जब आत्मा निकल जाती है, system failure, whole system collapses. अब सोचिए आत्मा कैसी चीज है, इतनी energy है, it makes the whole system function. और हमारे जो 5 organs हैं, sense organs, इनका job है to bring information about the world, sight, sound, taste, touch, smell to the brain, and I use that information. आत्मा दूसरी दुनिया से आई है और ये शरीर इस दुनिया का है. How they are working together. कमाल है. बाबा कहते हैं ना आत्मा बारे में. आत्मा is the most sophisticated thing there is. इसको deep में journey करना है. Realize how amazing it is. Goes from one body to next body to next body, carrying its sanskars, karma. But do I understand what is the soul? Okay, so you understand it, but then do you practice it? Practice इसके application करना. और इसके लिए there is no substitute for, जैसे सागर बाबा ने practice की थी ना, मैं as I'm walking, कौन चल रहा है? आत्मा शरीर को चलती है. कौन इन आत्मा को हिला रहा है?
Atma is giving the order to this. यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यहाँ खाना बना रहा हूँ. Who is doing this? I am doing the action through the hand. इसको practice करते हैं. Sometimes we jump these steps and we go to very sophisticated things. लेकिन in basic practices you cannot miss. और फिर दूसरे के साथ हम interaction में आते हैं, conversation में आते हैं. ये संकल्प में can I see the shining star? And everyone, especially जिनके साथ थोड़ा मोह है, family member है, children है, parents है, husband, wife, पहले तो ये आत्मा है ना. इस जन्म में someone is my husband, wife, mother, father, child. लेकिन last life was not necessarily the same. really देखना हमारी first relationship है, हमारी soul to soul relationship. उसको जगाना है. इसलिए बाबा ने क्या किया था? क्या लिखा था? मैं आत्मा शुद्धात्मा है, नारायण आत्मा है. बच्चों के नाम आत्मा है। मेरी He did भी it, आत्मा huh? है. प्रैक्टिस किया Practice किया. Without that he would not be Brahma. उसको पक्का किया. You know, हमको आजकल बहुत ज्ञान है. Sometimes we forget the foundation. लेकिन foundation को पक्का करना है. फिर हमारे Most of time we forget the foundation. यहाँ मुझे लगता है कि अगर हमारे फाउंडेशन आत्मिक से पक्का है, 90% of emotional ups and downs finish. अगर पहले लेसन को ठीक से ध्यान दें, दादियाँ कैसे बनी? बाबा ने इतना को प्रैक्टिस किया, इतना पक्का किया उस लेसन को, तो उनका बड़े स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस बढ़ा. Also, we have to really continue to make this lesson of soul consciousness firm. Again and again and again. So जब आप practice करेंगे, फिर इसका result है, you will experience it. Experience मतलब आपको practical में लगेगा, my feelings are changing. जहाँ पहले irritation आता था, अभी उस situation में I feel very cool, peaceful. इस सिचुएशन में नर्वसनेस आती थी, एंजाइटी आता था, now you feel very confident. इस सिचुएशन में कोई कुछ कहता था, दुख आप में महसूस होता था, now कुछ दुख होता ही नहीं है. आपको अपने आप लगेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, I feel different. I am becoming stronger. It's the result of practice. Okay, you experience it, then do you realize it? Realization तो एक उसको कहते हैं pivotal point, pivot. हिंदी में क्या कहते हैं? Realize, महसूस करना. You know, इसको कहते हैं ना कि awakening moment, realization moment, eureka moment. या aha moment, जो भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं the penny has dropped. Finally, I understood. इतने साल के बाद, इतने बार पॉइंट सुना, अभी finally realize हुआ इसका मतलब क्या है. तो realization मतलब it has reached that level inside you, कि आपकी वृत्ति और आपकी दृष्टि बदल गई. It can be towards yourself, it can be towards someone else, it can be towards life in general. इससे एक बार बाबा ने कहा था कि realization कोर्स करो. मुझे याद है डबल फॉरेनर्स को बाबा ने कहा था, I think 85 या 86 में. उस टाइम तो डबल विदेशी about 10 साल ज्ञान में थे. And they were teaching, they were giving the talks, the classes, becoming famous in Brahmin family. बाबा ने उनको कहा था, फिर से कोर्स करो. ज्ञान you have understood and you are teaching, लेकिन have you realized it? ये the basic things, psychiatry, karma philosophy, how much I have realized. इससे बुद्धि खुल जाती है.
The result of realization is there is an explosion of enthusiasm which then allows you to transform your thinking. कभी आपकी thinking style बदल गई, जो deep संस्कार थे, now they have shifted, thought patterns are different. Because ज्ञान आप practically apply कर रहे हो, ज्ञान आपकी बुद्धि में है, it is shaping the way your thoughts are moving. जैसे soul consciousness और natural बन रहा है. You don't have to push so much, but you are more naturally in soul conscious state. और फिर number 10, final क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है? Final stage क्या है? Final stage है Blissful embodiment. स्वरूप बनना उसका, embodiment. You become the form of that point. मतलब now you don't have to consciously remind yourself. जैसे हम कहते हैं, हम सब दादियों के पीछे हम क्यों भागते थे? Observe करने के लिए क्या? What is soul consciousness in action? Soul consciousness whilst walking, how does it look? दादियों को observe करते थे. फिर दादी अपने आप बात करते थी. How they look, how they are talking to each other, how they are eating. Because you wanted to observe, how is it? हम लोग practice करते हैं. Sometimes we are very, doing it wrong or very unnatural, very formal. लेकिन हम दादियों को देखते थे, because they were practicing for so many years, they reached the stage of swarup. Then we understood, अच्छा, this is what it means. आत्मिक स्थिति जब कोई आपकी महिमा करे या कोई आपकी criticize करे या something doesn't work out, how is the soul conscious response? हमको क्या करना है? We have to go deep into the ocean. सागर के गहराई में जाना है. न सिर्फ ज्ञान रत्नों के साथ खेलना है, playing. Of course, playing with jnana is better than playing with waste thoughts. लेकिन this level is approximately here. इसको कहते हैं playing with the jewels of knowledge. लेकिन जैसे हम mature student बनते हैं, we have to go beyond playing. And when we come here, फिर हमको power मिलती है from that knowledge. And power is necessary in the buddhi to shift the sanskars, to control the mind. Without power, then it's like rearranging the deck chairs on the Titanic. Example सुना है आपने? Titanic जो ship था ना, इतना iceberg. मतलब if you rearrange the deck chairs, it's not going to change the direction of the ship. Nothing will change. So power is needed in order to change the direction of thinking. इसके लिए आपको research करना है ज्ञान का. एक है मुरली को सुनना, दूसरा है मुरली को पढ़ना, तीसरा मुरली को रिवाइज करना, चौथा मुरली को स्टडी करना, लेकिन फाइनल मुरली को रिसर्च करना. तो जब कोई मैच्योर स्टूडेंट होता है, he becomes a research student. University में भी research student. He takes one topic, research deep में जाता है उसमें. बाबा का slogan है, do the research and give the searchlight. दूसरों को searchlight दो, it becomes easy for others to understand. Okay, so far? So far so good? How much time we have? Some more time? Yes. I think
coming to be with you. I mean, even before 8 is traffic. Yeah, okay. I mean, I am here for 7:30. I think 7:30. 7:30. Okay, we'll do one more Then we thing. can do some meditation. Definitely, योग तो करना ही चाहिए. Definitely. Okay, just do one more thing. I'm going to show you a model. तो अभी कुछ लिखना नहीं, लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा, and then you please write. आपको चेक करना है कि हमारी लाइफ में in which areas I need to pay some more attention. तो चक्कर होता है ना wheel तो round होता है, लेकिन why are wheels round? Helps the things to roll easily. Roll easily है. अगर wheel square होता तो कैसे You करता? cannot roll anything. नहीं चलेगा. अगर wheel triangle होता है तो फिर the wheel is round in order to Yes. move smoothly. हमको देखना हमारा wheel of contentment कैसा है, संतुष्टता का wheel कैसा है. So we will look at eight areas in our life. अभी नहीं लिखना, please just observe. Don't write anything yet. So here, for example, will be 0 marks. And here will be 10 marks, 10 out of 10. आपको चेक करना है कि अपनी लाइफ में how content am I in these 8 main areas. So for example, एक तो है हमारा सुबह का योग या अमृत वेला. अब मैं आपको पूछूं, how content am I with my अमृत वेला? जागता तो हूँ लेकिन experience होता है. Am I struggling? Am I looking at the watch? How I feel? Can it be more powerful? So someone may say, well, maybe it's 6 out of 10, for example. There is room for improvement. दूसरा हो सकता है मेरा general state of yoga दिन में, as I'm going through the day, मैं योग रहता हूँ या do I forget, do I get lost in my actions? कितना आत्मिक स्थिति और बाबा की याद है during the actions. So you may say, oh, not bad, maybe it's 8, something like that. फिर तीसरा हो सकता है ज्ञान journey. So am I an active journer? Really, जब मैं मुरली सुनता, do I take a point and actively churn, or am I passive journer? कि दूसरे की churning के ऊपर मैं rely करता हूँ. But do I really study? Or do I just say, हाँ, box को tick कर दिया, आज से मुरली सुन ली, done, finished? Or do I, as a student, want to choose करना, and I must journey during the day? So maybe you can say, oh, I need to work on that. Maybe it's 4 out of 10 perhaps. Next area can be seva. So seva, am I offering myself for seva? Am I actively serving? My creativity है, am I coming up with new ideas? या am I waiting कि कोई मुझे कुछ सेवा दे तो मैं करूँगा? How am I doing in seva? How is my number? Where do I rate in seva? So maybe a person can say, well, I do seva, but maybe it's 6. I could be doing more. फिर next आ सकता है relationships with Brahmin family. तो दूसरों के साथ मेरे relations कैसे हैं? We have to check at least our main relations. Is there exchange of love and respect? Is there smoothness? Is there friendliness? या
कोई व्यक्ति है, I'm not talking to him, he is not talking to me, and I just said, okay, not my kind of person, not my cup of chai. बाहर रखा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ टॉक्सिक एनर्जी है, उसको ठीक करना है। उस एनर्जी का हम ऊपर नहीं ले जा सकते। We have to fix it before the Lord says, I will fix you. So we have to check. बाबा ने कहा था एक बार 95% of the people in your life should give you certificate of contentment. तो उसके लिए हमको ठीक करना है। अगर if some relation is bad with someone, इसको छोड़ना नहीं है। At least मन से उसको good wishes देने हैं, positive thoughts, pure feeling. So from my side, I'm cleaning my side at least. वो सुने नहीं सुने, it's his business. From my side, I have to clear my part. Then there is also relationships with Lokics, Lokik family. इसका भी साकार बोलने में आया था, तो उनको भी खुश करना है, उनकी भी सेवा करनी है। ऐसे नहीं होए वो कंप्लेन करेंगे, आप लोग तो you don't like us, you like your सफेद कपड़े वाले आपको पसंद आते हैं, हमको तो you are ignoring, dismiss कर लिया। मतलब we have to find some way कि at least positive relations होनी चाहिए। Maybe वो ज्ञान को accept नहीं करते, ठीक है, लेकिन at least we can be friends. So I have to do something. क्यों धाम कौन है? दाता के बच्चे। पर सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते, करके भी नहीं देख सकते हैं कि किया है, मतलब कंप्लेनिंग का संस्कार है किसी का, मतलब करके भी वो देखते नहीं है किया है, तो कैसे फिर उनको मतलब खुश किया जाए ऐसे लोगों को। पहला स्टेप तो ये है, मुझे देखना है मैं किसी से दुख लेता हूँ या नहीं। फर्स्ट थिंग इज दिस, आई मस्ट नॉट टेक सॉरो, किसी से दुख लेना नहीं है, गलत हो गया। फिर दूसरा, कभी हम दूसरों के साथ बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट मन सा सेवा कर सकते हैं। गुड विशेस, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर फीलिंग्स, तो उससे फिर दूसरे की वृत्ति बदल सकती है। और हर एक आत्मा को क्या चाहिए है? वेलकम। हर एक को क्या चाहिए? एसेंस में एवरी सोल वांट्स लव एंड रिस्पेक्ट, ये दो चीजें हैं। And if I can give that more, फिर हमारे रिलेशन जैसे सेटल होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी फिजिकल हेल्थ। उसका भी थोड़ा ध्यान देना। You have to check ourselves because it's the last most valuable body. इससे तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इससे हम सेवा करते हैं। तो सब चेकिंग we should do, इतना नहीं कि totally we become body conscious, लेकिन health conscious, the exercise and diet and proper sleep. You know, we have not to be careless there. We have to look after. They say Baba was looking after his body very well until 93. So we have to check ourselves. The last was UHF connected. ये बहन क्या कहती रहती है? सुनने हमको जॉब सिचुएशन चेक करना है कि जॉब तो है, लेकिन हाउ डू आई फील अबाउट माय जॉब। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था जॉब, बट आई वाज many years ago UK में, I was not happy there. I felt like job was failure. Job karna means you failed. Job is dirty. Job is something bad. And then I thought, okay, spending 7-8 hours in the office feeling like this is too much time. I don't want to feel like this. So then I changed my attitude. The job also seva ka sthan hai. Let me change my attitude and make it unlocking. Kabhi you have to change your job sometimes.
But it shouldn't be, I feel unhappy. So something has to change. अगर job नहीं है, then if I am retired, for example, same question is के और मैंने तो यहाँ लिखा नहीं है number relationships with the Brahmin family. So maybe it's, for example, okay, maybe 7, for example, relationships with logic. For some person, maybe it's 3. Body health, 6 हो सकता है. Job, how I feel about it, how I'm using my time. Okay, maybe it's 7, something like that. आपको check करना है, even if I'm retired, मैं अपना time कैसे use करता हूँ. Once you've done that, फिर क्या होता है? Then you connect the dots. Your videos on photo. अरे डायमंड बन गए तो ये आपका wheel of contentment. अगर आपकी गाड़ी का wheel ऐसा है, तो गाड़ी कैसे है? कैसे संपूर्ण होंगे स्टार्ट हो जाए Yeah. तो आपको देखना है ऐसे तो okay, then which area I need to work on. तो यहाँ से फिर प्लान बनाना है कि ओके इसको कैसे इसको इंक्रीज करो, उसको कैसे इंक्रीज करो. अभी जो थोड़ा टाइम है, अभी अपना wheel of contentment, make your wheel. तुमने तो कर भी लिया, लेकिन make your wheel, draw your wheel for yourself and make a little plan for yourself. How I can improve this wheel for myself. और 5-6 मिनट है और पर्सनल वर्क पेन पेपर पर ना सबके साथ, सबके पास. अगर कोई जॉब नहीं करता तो क्या करें टाइम अपना जो टाइम है दिन में कैसे यूज करते हैं. Am I happy with how I'm using my time? Your time.
You had touched on um, the levels of effort making, and we were talking about the um, double Tivra Purusharth. So I want you to shed some light on that in terms of each of these areas, like because I understand this probably is showing you the double Tivra Purusharth, the the extra intense effort that we can do at this time. So I hope, because you touched on it in the beginning, so if you can shed some light on that. शक्ति हो गया सबका? Some kind of plan. इस बात पे और ध्यान देना चाहिए कि Brahmin life is a package. ऐसे नहीं हो कि एक एरिया में बहुत ध्यान है, दूसरे एरिया में I don't give attention. कि वहाँ फिर जैसे असंतुष्टता, lack of contentment and above waking, you know. Even all areas we are paying attention to. Thank you. Then you feel content. So everyone is different. कईयों का जैसे ज्ञान पे और अटेंशन होता है, कहीं का योग पे ऊपर होता है, कहीं सेवा बहुत करते हैं, लेकिन जैसे 4 सब्जेक्ट्स में भी बैलेंस की जरूरत है. तो आपको देखना है कि अगर हमारा पुरुषार्थ के लेवल यहाँ है, what does it mean for me individually to do Tivra Purusharth? Only you can answer that. Or what does it mean to me to do double Tivra Purusharth? मतलब individual checking according to where you are at. Can you share your personal Tivra Purusharth, just to give an idea of where are we heading? Yeah, and for example, it can be in this journey, for example, you know, so sometimes the experience is okay, you hear the Murli and then, you know, become busy in service or job or administration or something. A little bit can be lazy buddhi, lazy intellect. Taking there an upgrade in Tivra Purusharth, let me listen. I must choose at least 1 or 2 points from the Murli and make sure I churn it through the day. I pay attention. And then you can make it more organized. Okay, from morning until lunchtime, I will churn this point. Lunchtime till evening, I will churn different point. So like making your thinking and churning more organized. So that sense, in a way, you make a plan where something is more organized, then you are saving time and energy. And you get some progress. जैसे आज बाबा ने कहा था ना चार्ट रखना है. Some people keep very serious chart. Other people like just a few points. Depends on individual as well. You can, you know, they say that if you fail to plan, that means you plan to fail. So just like a student, school में होता है student, he makes a study plan. To check, okay, these are the subjects, am I covering all the subjects? Where am I weak? I need to pay more attention. तब ये भी देखना है हमारे कमियाँ कहाँ है. Maybe I'm weak in tolerance power. Maybe I'm weak in, you know, power to face. कौन सी 8 शक्तियों में which one I am lacking in, which 2, 3 I am lacking in. Identify and say I must work on this. I must practice doing this. And of course, always have more yoga for that.
maybe I'm lacking in self-confidence. I have to practice more Swaman, practice the different titles of Swaman Baba is giving in an organized, systematic, disciplined way. It's all about knowing yourself. अपने आप को जानना है कि कहाँ आप में अभी तक कमी है और उसका solution क्या बाबा ने दिया है. To make a plan for yourself. Like this, then, when you feel you are progressing, then naturally more motivation comes to progress further. और अव्यक्त मुरलीस का भी जैसे अव्यक्त, nothing more rich than अव्यक्त मुरलीस इस दुनिया में. इतना खजाना बाबा ने दिया है. So we have to do like research on अव्यक्त मुरलीस. अपने आप पढ़ना है. Read by yourself. Om Shanti. You can take, for example, one Avyakt Murli. One Avyakt Murli for 3-4 days. You can be busy with that. ऐसे नहीं every day read different Avyakt Murli. नहीं. One daily Murli to something else. You can additionally, if you read one Avyakt Murli, 3-4 days you stay with it. Journeying, practicing, exploring, again and again. Then you come to another Murli, 3-4 days. So जैसे personal research चल रहा है, तो इससे जैसे बहुत शक्ति मिलती है, and you find your व्यर्थ संकल्प are reducing because you are practicing to read again. So some personal study plan is necessary in order to make best use of time. Very individual, very personal, according to your interest and your schedule as well. Okay, Raji, so time to stop for yoga, I think. Okay, 8 बजे तक. Yeah, better. Instrument music. Will you be doing guided? Yogesh has disconnected.
morning only 6:30, 7:30. There will be short class also from Yogesh right. आज जो किया है उसका थोड़ा बहुत ग्रुप फोटो आज देना कल देना देख लो हाँ, तो वेट करो। कल है फोटो हाँ अभी आपको थोड़ा सा हाँ वेट करें